हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड प्रीत कमल। आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने किस तरह से सिमुलेशन करनी है सर्किट लैब सॉफ्टवेयर के ऊपर। ठीक है, तो आज हम कुछ वीडियोस देखेंगे, फिर उन वीडियोस के थ्रू यू विल कम टू नो कि कैसे हम लोग सिमुलेशन जो है वो अपनी इस सर्किट लैब के थ्रू कर सकते हैं, ताकि हमें प्रोजेक्ट्स बनाने में थोड़ी इजी हो जाए। राइट, तो लेट्स लिसन टू दिस। Hi! In this video tutorial, we are going to be simulating an LED with a current limiting resistor. So I'm going to grab an LED and drag it onto my workbench and a resistor, hook them up with a wire. Let's drag a voltage source on. I'm going to flip it horizontally just so the numbers are outside and make it a 5-volt voltage source. And then just hook up the wires this way. यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसने यहाँ से लिया 5 वोल्ट्स डीसी लिया, रेजिस्टर उठाया यहाँ पैसिव कंपोनेंट्स में से, एलईडी उठाया यहाँ से। ठीक है, उन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। फाइन। I'm going to add a couple of named nodes. Call that one A, just so I can visualize my output a little better later. B, always good practice to name your nodes. I need a ground on this circuit. Then I'm going to hop over to Simulate tab. अब देखो यहाँ पे उसने क्या किया, नोट्स दिए कि ये वाला नोड जो है उसका नाम A है, ये जो नोड है उसका नाम B है, साथ में उसने ग्राउंड अटैच किया। और यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन होता है सिमुलेट का, बिल्ड और सिमुलेट। जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे अपना, तो वहां पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे बिल्ड और सिमुलेट लिखा होता है। बिल्ड मतलब सर्किट बनाना और सिमुलेट मतलब उसको चला के देखना। ठीक है, तो अब वो सिमुलेट करने जा रहा है, इसने सर्किट बना लिया है। And I can just click on A and B so I can see what the value is at those nodes. You can run the DC solver and you see you have real values there. I also want to see the current going into my LED here because that tells me how bright it's going to be. And I see I have about 28 milliamps, which is actually maybe a little too. ये देखो, अब उसने जो वोल्टेजेस लिखी थी, पॉइंट्स नोट किए थे कि इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज आ रही है, फिर आफ्टर द रेजिस्टेंस उसने देखा कि क्या वोल्टेज आ रही है, फिर उसने एक और पॉइंट सिलेक्ट किया कि एलईडी में करंट कितना जा रहा है। तो यहाँ पे ये चीज शो हो रही है कि ए नोड के ऊपर 5 वोल्ट्स जो है वोल्टेज जो आपने प्रोवाइड करी थी वही मिल रही है। जो नोड बी है वहां पे रेजिस्टेंस के बाद, मतलब 100 ओम के रेजिस्टेंस में से क्रॉस करके जो वोल्टेज बची है वो 2.130 वोल्ट्स बची है अप्रोक्सीमेटली। और जो यहाँ पे डी में जो आपका एलईडी है उसके अंदर से जो नैनो एम्पेयर्स में करंट फ्लो कर रहा है, दैट इज 28.82 नैनो एम्पेयर्स। तो इस तरह से आप नोड्स सिलेक्ट करने का ये बेनिफिट होता है कि आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, उसकी वोल्टेजेस और करंट के बारे में पता चल जाता है कि कितनी वोल्टेज कितना करंट उसके अंदर से फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स कि ये सर्किट इज इन वर्किंग कंडीशन। bright. So I hit escape to hop out of simulation mode, double click my resistor, and let's make the resistor a little bigger. And hit F5 to rerun the last simulation. So you can and see now here it's उसने about क्या किया, अब यहाँ पे R1 को क्या किया, 100 ओम की जगह 200 ओम कर दिया, मतलब रेजिस्टेंस डबल कर दी। तो यू कैन सी हेयर कि पहले यहाँ पे 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही थी, अब यहाँ पे 1.90 जो वैल्यू है वो आ रही है। दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो रही है। 15 milliamps, which is pretty good. And that's how you do it. That is how you simulate an LED with a current limiting resistor. तो इस तरह से हम सिमुलेशन कर सकते हैं। अब आगे इसने बहुत सारे सर्किट्स बनाए हुए हैं, यहाँ पे लो पास है, वोल्टेज और करंट सीरीज है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, 2:1 मल्टीप्लेक्सर है, और बहुत सारे सर्किट्स हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं, जिससे आपको की आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आपने अपने सर्किट को वर्क करवाना है। तो हम ऐसे करते हैं, अभी इन्वर्टिंग एम्पलीफायर देखते हैं। ठीक है, Hi! In this video, we're solving a common problem. How to build and simulate an inverting op-amp circuit with a specific gain. So I'm going to open up my Circuit Lab editor here. And I'm going to go over the operational amplifier section. And I'm going to drag one of these bad boys onto my circuit. Now there's two properties of an op-amp that we're going to be talking about. First, an op-amp will take the voltage at these two input terminals, the non-inverting terminal and the inverting terminal, and take the difference of those two voltages and multiply it by a really, really high number at the output. That really, really high number is referred to as the open loop voltage gain. That's set here in Circuit Lab as this A_OL.
And notice how all of these have some super, super high number. You've got millions, hundreds of millions. The actual number in this case doesn't matter. There are some cases where it does, but for our purposes right now, the actual number doesn't matter. Just remember it's a really, really high number, the open loop voltage gain. The other property of the op-amp that is very important here is that no current is allowed to flow into or out of either of these two terminals. Well, it's actually a very, very small current in these sort of real device models. There is something called an ideal op-amp, which is usually comes up in problem sets or maybe in the literature, which aren't real, but they have these two properties sort of cranked up to the maximum, which means the open loop voltage gain is actually infinite and zero current can flow into and out of the terminals. But that's not real. We're going to drop this real model into our circuit and sort of build our amplifier off of that. Cool. These two properties we can actually आपका माइक म्यूट है मैम। यहाँ पे बच्चे वो क्या बोल रहा है कि जो ओपेम्प है जो हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो ओपेम्प कैसा है, कौन सा यूज करना है हमने ओपेम्प। हमने आइडियल प्रॉपर्टीज वाला ओपेम्प नहीं यूज करना है, हमने प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज वाला ओपेम्प यूज करना है, क्योंकि हम सिमुलेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो सर्किट है वो हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकें फिजिकली, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सिमुलेशन कर रहे हैं, राइट। तो इसलिए हमें जो ओपेम्प चूज करना है वो इस तरह का ओपेम्प चूज करना है जो प्रैक्टिकल प्रॉपर्टीज वाला ओपेम्प हो, ठीक है। see here in Circuit Lab. But just setting up a quick circuit, I'm going to ground the non-inverting terminal, and I'm just going to name my output node here, out 1, and I'm going to drop a voltage source into my inverting terminal, just so I can click around and see the gain. I'll go over to simulate. Oh, look, I'd already done these. So I'm just going to run the DC solver. Oh, Vin. Oh, I didn't name Vin. Okay, I'll go name my input node. It's good practice. There's my input node. Let's go ahead and add those back in. There we go. Run the DC solver. Let's see, our voltage at the input is 1 volt, as expected, because I put a 1 volt voltage source there. And my output is now negative 1 million volts. And that is true because this is 0, 0 minus 1 is negative 1, times the open loop voltage gain, which we can see. और अभी आपने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे उसने इन और आउट 2 नोड्स जो है उसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। वो 2 नोड्स पे आपकी वोल्टेज शो होगी। अब इनपुट पे हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को उसने ग्राउंड कर दिया, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे उसने 1 वोल्ट डीसी इनपुट दी, और जब आउटपुट चेक करी तो आउटपुट वाज 1 मिलियन वोल्ट्स, राइट। दैट मीन्स क्योंकि इसका जो गेन है वो बहुत ज्यादा हाई है, और उसने 1 वोल्ट को 1 मेगा वोल्ट जो है या 1 मिलियन वोल्ट जो है उसमें कन्वर्ट कर दिया। Here is 1 million is negative 1 million. So that's cool, but not really that useful, right? I want to be able to set that gain. I can't just have an arbitrary gain set by some manufacturer for me. So in order to get to this inverted amplifier, I'm going to introduce one more concept here, and that is negative feedback. Now, negative feedback is a very deep concept. It is multiple semesters in college, but I'm trying to introduce it here sort of in a very lightweight way, and try to reason about this circuit. Now, let's say I have this circuit in this configuration here. Let me add my output back. Should not have deleted that. Let's look at this configuration. And let's say that the universe was to somehow randomly add a tiny bit of voltage here at the non-inverting terminal. Say it was to go up by a tiny bit. Well, the amplifier would take this difference, multiply by a really high number to make out go up a lot, right? But then because of the way I set it up, that output would sort of present itself at the inverting terminal here. So it'd be very high
negative inverse, which would sort of fight that output, right? So anything that makes this go up will make this go up, but then get fought by itself. So the way we've set this up, it means that the op amp is going to balance out any changes. Oh, 1 second, I lost my tab. There we go. It's going to balance out any changes, so there's going to be no difference between these two input terminals. In this configuration with negative feedback, I've basically built a follower circuit, which is kind of cool. You can actually show it in Circuit Lab by adding a sine wave here. And if we go to simulate it, oh my, I'm going to go over the time domain simulation and see this output. Then bring my input back in. Let's go ahead and see that. And we can see just one line. Oh, because I only graph my output. Let's graph the output and the input. So now there's two lines, but they're right on top of each other, right? Because this is a follower circuit. Cool. That's neat. तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि अब उसने उसी एम्पलीफायर को ओपैम्प को दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में लगाया। ये किसका माइक ऑन है बच्चे? बंद कर लो माइक। उसने उसी को दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में लगाया, ठीक है? ओपैम्प को दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्ट किया। अब यहाँ पे उसने क्या किया कि एक फीडबैक लूप बना दी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे उसने साइन वेव लगा दी, साइन वेव 1 किलोहर्ट्ज की, और इन और आउट को वो चेक कर रहा है। और यहाँ पे उसको रन किस में किया? टाइम डोमेन में रन किया, राइट? तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। आप डीसी स्वीप में रन करना चाहते हो, आप टाइम डोमेन में रन करना चाहते हो, आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में रन करना चाहते हो, ठीक है? तो डीसी स्वीप का क्या मतलब है? अगर आप डीसी सिग्नल दे रहे हो और आपको सिर्फ इनपुट आउटपुट वैल्यू वोल्टेजेस और करंट्स चेक करने हैं, दैट्स इट, तो आप उसमें वर्क करवा सकते हो। टाइम डोमेन का क्या मतलब है कि अगर आपने टाइमिंग के अकॉर्डिंगली चेक करना है कि किस टाइम पे आपने इनपुट दी, किस टाइम पे आपको आउटपुट मिल रही है। और फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर आप एसी सिग्नल जैसे यूज कर रहे हो और उसमें कुछ वेरिएशंस आ रही हैं फ्रीक्वेंसी के रिलेटेड आउटपुट साइड के ऊपर, तो उन्हें अगर आपने नोट करना है तो फिर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में रन करते हो, राइट? तो इस तरह से आप अलग अलग तरीके से इनको रन करके चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने क्या देखा कि इनपुट साइड के ऊपर अपने 1 किलो हर्ट्ज का पल्स दिया, तो इनपुट साइड पे उसने डिस्प्ले कर दिया। ऐसे ही आउटपुट साइड पे जब उसने चेक किया तो वो आउटपुट साइड पे भी डिस्प्ले कर रहा है। But still not that useful, because I want an amplifier, right? I want to have some gain. All right, so how do we set that up? So I'm going to bring this input out here. Oh, I don't need that anymore. Get rid of these wires. I'm going to grab the non-inverting terminal again. And I'm going to grab a resistor here. I'm going to drop that in there. I'm going to call चेक this करना one पड़ेगा बेटा, अभी RF. देख लेते हैं। And then I'm going to drop another voltage source. It's 1 volt again. Connect that there, line things up, because why not? That's my input. I'm going to drop another resistor in right here. And I'm going to call that guy Rn. Okay, so let's look at this circuit and let's try to reason about it in the exact same way we did before, right? So we have the same sort of negative feedback configuration whereby the op amp is going to work. अब यहाँ पे उसने क्या किया है? नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसके साथ वो बनाई है, ठीक है? नेगेटिव फीडबैक लगा रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया है और जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है हमारा उस पे उसने वोल्टेज और रेजिस्टेंस लगाई है और फीडबैक में भी एक आरएफ फीडबैक रेजिस्टेंस जो है उसको करेक्ट किया है। तो अब इट विल चेक कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है। Work to make these two terminals have the exact same voltage. Now it can't do that directly, but what it does is it changes the output and then measures the input again and then changes the output again, sort of in a negative feedback loop that essentially makes these two terminals be exactly the same. And I've grounded the non-inverting terminal, which means this terminal is also ground. That's a virtual ground, it's often referred to as. So if this ये कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो वर्चुअल ग्राउंड का, कि अगर एक टर्मिनल ओपैम्प का ग्राउंड टर्मिनल पे होगा तो दूसरे टर्मिनल से भी आपको क्या मिल सकता है? ग्राउंड टर्मिनल जो है दूसरा भी वर्चुअली ग्राउंड ही कंसिडर किया जाएगा, राइट? तो वही कॉन्सेप्ट ये यहाँ पे बता रहा है।
This is ground, and I have put 1 volt source here, and I have a resistor here. That means I can use V equals IR to say there is some current that is flowing this way, right? There has to be, because voltage, resistance, current. Now that current cannot flow into this terminal. That is the other property of our op-amp. So that means that same current has to go up and through this feedback resistor RF. So if I have the same R and the same I, that means the drop across this resistor has to be the same as this V, right? So I predict that this output voltage right now is going to be -1. Let's go ahead and check that to see if I am right. Get rid of these. And let's measure both the input and the output, run the DC solver, and aha, I am correct. The output of this circuit right now is -1. Now what would happen if I say double this resistance? So thinking about it again, I have a V, a voltage drop, across an R, which means there is some I going this way. That same I is now going through this resistor. So I have the same I, but twice the R. So that means V should be twice V. I predict out is going to be -2. Let's see if it is. Aha! It is! Huzzah! सो यहाँ पे उसने क्या बताया कि अगर हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर को यूज कर रहे हैं और उसकी जो रेजिस्टेंस है, जो इनपुट साइड पे यूज कर रहे हैं और जो फीडबैक में रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, अगर वो दोनों रेजिस्टेंसेस सेम है तो दैट मीन्स इन दोनों ब्रांचेस में सेम करंट फ्लो करेगा। और अगर इनमें सेम करंट फ्लो करेगा तो आपकी आउटपुट वोल्टेज और आपकी इनपुट वोल्टेज जो है वो एग्जैक्टली सेम होंगी, बट आउटपुट वोल्टेज विल बी इन नेगेटिव बिकॉज हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल के ऊपर अपनी इनपुट लगाई हुई है। और अगर हमने इस रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज किया मोर देन दिस, राइट, या डबल कर दिया, या जितनी भी वैल्यू से हम फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं तो उतनी ही वैल्यू से उसके करंट में ड्रॉप आएगा, राइट, मींस हाफ हो जाएगा करंट जो इस लाइन में फ्लो कर रहा था और जो इस लाइन में फ्लो कर रहा है। अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली करंट विल ड्रॉप, राइट। लेकिन यहाँ पे जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगी, जितना हमने रेजिस्टेंस में इंक्रीज किया उतनी ही यहाँ पे वोल्टेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। तो बिकॉज जो करंट है दैट इज इक्वल्स टू आई आर, वो उसके बराबर है, वोल्टेज इज इक्वल्स टू आई आर के बराबर है, राइट। तो यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज है वो पहले -1 आ रही थी, जैसे यहाँ पे +1 दिया था। तो अब जब हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस को, फीडबैक रेजिस्टेंस को जो है डबल किया, तो उससे क्या हुआ कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो डबल हो गया, तो -2 हो गया वो। really cool thing here is that now I have control of the gain by just changing these resistors around. It's actually the ratio of these two resistors that are able to set my gain. So if I make this RF be 5 times as Rin, run the DC solver, my output is now -5. And we can तो यहाँ पे देखो अब उसने क्या किया यहाँ पे कि रेजिस्टेंस, जो फीडबैक रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को इनपुट रेजिस्टेंस से 5 टाइम्स कर दिया। अब 5 टाइम्स किया तो यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट हो रही है दैट इज आल्सो जनरेटिंग 5 टाइम्स। हो नेगेटिव में रही है क्योंकि वो इन्वर्टिंग टर्मिनल को यूज कर रहा है, अदरवाइज इट इज 1 वोल्ट इनपुट थी और 5 वोल्ट हमारी जो आउटपुट वो है वो हमें मिल रही है। मतलब इन दोनों की वैल्यूज के हिसाब से जैसे हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो गेन होता है वो 1 प्लस आर एफ बाय आर इन होता है, राइट। तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करके अपनी आउटपुट के साथ उसको मिक्स करेंगे तो आर एफ बाय आर इन की वैल्यू जितनी भी होगी उतना ही गेन जो है वो वहां पे मल्टीप्लाई होके उसको मिल जाएगा। तो इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर हम फीडबैक लगाते हैं तो वो वैल्यू होती है -RF/RN, जो गेन की वैल्यू होती है, राइट। और अगर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगाते हैं तो 1 + RF/RN होती है, राइट। तो ये गेन है, गेन कितना है -RF/RN। तो RF की और RN की वैल्यू का डिफरेंस जितना, सॉरी, जो उनका रेशो जितना भी होगा, तो अगर वो 5 टाइम्स है तो आपकी आउटपुट 5 टाइम्स बढ़ जाएगी। अगर वो 3 टाइम्स है तो आपकी आउटपुट जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। ओके, sort of play around with the simulation a little bit by changing my input to now be a voltage sine wave so I can see this in a time domain simulation.
तो अब उसने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से डीसी वोल्टेज को हटा के यहाँ पे क्या लगा दिया हमने, डीसी सोर्स को हटा के हमने एसी सोर्स लगा दिया। उसने एसी सोर्स लगा दिया, 1 किलो हर्ट्ज का एसी सोर्स लगा दिया। तो अब जो आप पहले डीसी स्वीप में वो सिमुलेशन चेक कर रहा था, अब वो डीसी स्वीप की जगह टाइम डोमेन स्वीप जो है उसके अंदर वो अपनी सिमुलेशन करेगा। So time domain, same sort of time domain simulation as before. And let's see my output versus my input and run it. And huzzah! This is my input going up and down between 1 and -1. And you'll see the output is sort of an amplified version of that. It's a negative. सो देख रहे हो आप लोग, ये जो येलो लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है, दिस इज बेसिकली व्हाट, ये जो येलो लाइन है हमारी, ये हमारी है इनपुट सिग्नल, राइट। और जो ये आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये ब्लू लाइन जो है दिस इज द आउटपुट सिग्नल। तो यू कैन सी कि 1 वोल्ट हमने इनपुट दी थी, या 1 किलोहर्ट्ज 1 वोल्ट इनपुट दी थी, राइट। सेम फ्रीक्वेंसी पे हमें एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ आउटपुट जो है वो मिल रही है। नेगेटिव में क्यों है, क्योंकि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे हमने अपने इनपुट को कनेक्ट किया है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कि इतनी ज्यादा जो हमें गेन है, उस ओपैम्प का इतना ज्यादा गेन है जिसे हमने नेगेटिव फीडबैक के थ्रू कनेक्ट किया है, उसकी वजह से, इस गेन की वजह से आपकी आउटपुट इज सो मच एम्पलीफाइड। सो दिस circuit is working as an amplifier circuit. Amplified version of that, but I've made an amplifier for which I can set the gain. Yay! Pretty cool. You can find this link to this circuit in the description of this video. You can open it up, change it, simulate it for yourself, and see what happens. If you found this to be helpful, please like the video, and we will see you next time. ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ आप लोगों को कि किस तरह से हम लोगों ने जो सिमुलेशन है वो करनी है सर्किट लैब के अंदर। एवरीथिंग इज गिवन, राइट। तो आई विश इट इज ऑल क्लियर टू यू। इफ स्टिल देयर विल बी एनी डाउट्स, वी विल बी टेकिंग देम लेटर ऑन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।